हेलो। या ऑडिबल सर? हाय संदीप। Hello. हाँ, आवाज आ रही है? ऑडिबल? Yes, yes, you are audible. Yeah, कैन प्लीज चेक द योर स्लाइड्स? sure. Now slides are visible. या नॉट अभी? हाँ, या विजिबल विजिबल। Okay, okay, super. ओके, जब स्टार्ट करने के लिए कहा जाए सर, तो उस टाइम Sure. आप इसको स्टार्ट कर दें। Okay, okay, वी विल वेट 5 मिनट्स फॉर sure. ज्वाइनिंग। एवरीबडी विल ज्वाइन, देन वी विल स्टार्ट। ओके सर। Okay, okay.
Uh, Now, sir, we will start the Kisan Mitr meeting webinar. Yeah, audible, sir. Yes. Uh, ये start करते हैं, sir. Okay. Okay. A very good morning to one and all present here. First of all, first of all, I request all the non-speaker to keep their mic on mute. Let the speaker complete a session, and we will have a separate question and answer round at last. I, Gajan Singh Verma, on behalf of Chaudhry Charan Singh, National Institute of Agriculture Marketing, Jaipur, welcome you all to the Kisan Mitr webinar series on agriculture technology for marketing organized by CC NIAM, Jaipur, partnership with Office of the Principal Scientific Advisor, Government of India. CC NIAM Jaipur is an autonomous organization established under Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India, to cater various agriculture related aspects such as training, research, consultancy, education in agriculture marketing. CCS NIAM is also organized globally as the Center of Excellence in Southeast Asia. Kisan Mitra Friends of Farmers is an initiative by the Principal Scientific Advisor Office in partnership with Chaudhry Charan Singh, National Institute of Agriculture Marketing, Jaipur. The objective of this initiative is to bring technologies to farmer and reverse migrants who have moved rural due to the impact of COVID-19. Under this initiative, more than 1,000 technologies have been identified, which are supported by ICR institutions, NABARD, Ministry of Rural Development, ISRO, and Gates Foundation. On the supply side of the technology, there are innovators, entrepreneurs, researchers, academic research institutions talking about their technology, and the webinar participants being on the demand side, who are typically agribusiness enthusiasts, government functionaries, agri-business companies, and other agri-businesses stakeholders who are need in the agri-technologies. Moving further, I would like introduce our today's speaker, Mr. Sandeep Sharma, founder and director of Paravet India Private Limited. He has over 14 years of the experience where he worked with us US based certification agency to audit organic farmers and processing unit for compliances. He also head of the NGO to make quality smallholder farmers growers groups for quality certification, working on small livestock projects with universities of Liverpool and ILRI, the International Livestock Research Institute for Smallholder, inspired him to do different with that in mind. He started Paravate India Private Limited, a startup that built mobile-based application to connect farmer and veterinarian. Now, I would like to invite Mr. Sandeep Sharma to take his session. Para, uh, Today topic is Paravate Digital Expert Tool to support livestock farmers. Over to you, Mr. Sandeep Sharma. Sir, can Yeah. you start your presentation? Yes. Sure. Is my presentation visible? Yeah, visible, sir, visible. Okay. Okay. So first of all, thank you so much for a nice introduction. And my name is Sandeep Sharma. I like to give a big thanks to CCS NIAM to providing a very wonderful stage to discussing things those are bringing by the entrepreneurs in terms of the technology, in terms of the innovations to the rural community and farmers. So myself, Sandeep Sharma, and I'm the founder director of Paravet India. We're based in Jaipur. So we are going to be cover how these mobile apps going to support the farmers, how digital things or tools going to help the farmers, livestock farmers, to improve their animal health and ultimately the benefit which they are getting out of livestock. So today, I am going to be cover a couple of areas like what is the problem statement, why we invent, why we go for
uh, digital way, mobile way to support the livestock growers. And then farmer promotion, virtual consultation, that's the key solution which we are providing as of now. What are the things we are planning in near term? That is the feed and nutrition. And at the last, I am taking you through the app demo. That's a 2-3 minutes demo, which give you the glimpse that how app works between farmer and veterinarian. Yeah. So just a minute. Okay. Problem statement. So there is a chronic shortage of vet extension services for animal health, nutrition, and managing the smallholder farmers. There is a lack of trained resources. So according to the Veterinary Council of India, there should be around 5,000. There should be one veterinarian. There should be one veterinarian, cover the 5,000 livestock or animal population. Whereas in current scenario, one veterinary doctor is covering around 20,000 livestock or animals. There is a poor access to knowledge or the best practices. That could be, how they are handling their livestock, how they are, going to improve the growth of the livestock. So those things are covered here. Computers. So as of now, there are the three of solutions available in for the rural farmers. So one based on the app-based, then there is another one web-based solutions, and then the third one is the virtual consultation. They have their own limits and demerits. So the app-based solutions generally communicate with the farmers through the SMS. They don't have a, let's say, individualized or tailoring solution for the farmers or the livestock growers. Whereas the web portal based and the virtual consultation need internet connectivity. They are more focused on animal health and hygiene. Whereas our tools, which we are building and we build, are mobile handheld based tools. Those are very comprehensive in terms of providing individualized practices, educating the farmers through animations. We run the animation clips to explain the symptoms, to explain the best practices, which help them to make the good decisions. There is a significant research we have done in terms of identifying the diseases, identifying the symptoms, where and how it spreads, and what are the prevalence for those symptoms and diseases. Our tools, can be integrated with the things like calendars, the diaries, and then it can help to the vet organizations, government, as well as the research organizations. Those are collecting the data and managing the data in terms of livestock health and best practices. Farmer proposition. So from our previous experience, we have developed, certain things for these digital tools. One is like, a structured way to explaining the livestock diseases, optimize the feed cost, how, one can optimize the feed cost. So here we run the, least cost linear equation to get the, feed output. Then we use drastically, we use usually uh, animation content to explain our ideas to farmers, whether that is explaining a symptom or whether that is explaining a good practice. The tools which supports in terms of animal health technicians, veterinarians, and farmers to identify disease and improve practice and nutrition. So in our Paravet expert tools, we are covering four major, categories, or one can say segments. One is the health, second is the nutrition, farm animal management, and business management. So in the health, we have our disease identifier and symptomatic identifier tools, where farmer get in details about the disease, and then he can also view the symptoms through the animation clips or through the real-time images. Nutrition tools. So basically, nutrition tools compares of what is the nutritional requirement of the animal, what its stage, and then what are the ingredients available locally and what he can source. Based on that, we help them to identify that okay, this could be your best ration, which you can go for it. Whether that is early stage of animal in their life cycle stage, or could be in a lactating stage.
our tools, very infographic, so it helps the farmer to understand that okay, which nutrient, which ingredients give me most. In farm and animal management tools, we are mostly driven by the calendar tool, which somewhere feeds our livestock diaries. So I give you example here. So if we know that okay, when the animal was born, based on that date we schedule vaccination for that animal and then deworming treatment. So, and these things are linked to the calendar and then its activities. And based on these activities and calendar, we send the alert time to time to farmer just to remind about the need of the vaccination and deworming. To explain deworming and vaccination, we also created the best practice for the vaccination or the deworming, how one can administer that, how one can use the vaccines and deworming to improve the animal health. Business management solutions basically deals with the inventories. For example, feed inventories. A farmer has to be, put the data into the feed inventory, which reflects that okay, what are the ingredients he need to be buy immediately, or what are the ingredients he has to be buy in near term. So those kind of site, those kind of visualization one can get through these tools. So I will like to take you through that our, a bit deep into our application, which says that, how one can identify a disease. So here you can see that we are using, tabs to generalize which part of the body of the animal disease one has to occur. So here there are the, like we have respiratory, head and eyes, digestive, skins, feces and urinary, reproductive and partial behaviors and parasites. So based on that, farmer going to be see the list of the diseases. Each list has, its animation clip uh, and the images. So when farmer click on, let's say, these small icons, there will be animation clip runs which explain about that particular symptom. That symptom, a farmer can understand good. If he didn't understand, then he can click on the image, okay, and but by image it can relate. This is the situation. This is the actually symptom. This is the actual condition of my animal. Yes, now I am sure this is the symptom. So once he is, assured that this is the symptom, then he has to check it. Then he has to be check it and then further go for identification. So here you will see that when going to click on the image icon, there will be a series of images. We can scroll from left to right, and then he can relate that okay, this is actually the symptom. We are also covering certain diseases in details. So in detail we are covering like a introduction of the disease, which play the series of animation from the primary symptoms to the secondary symptoms to the symptoms those are rarely occurs to the animal. We also cover the spread part. That's how this disease spread among the animals. Then we also cover things like manage and susceptibility. Susceptibility covers like because of this disease, which life stages of the animals are more susceptible, whether those are early stage of the life cycle or the late stages of the life cycle, or they are like female animal versus the male animal. So those things we cover under susceptibility. Now I like to take you through a virtual consultation. So, so let's start virtual consultation. So how it starts? It goes with the farmer. So farmer has application in his hand, and then he, seeing the animal and then matching the okay symptoms. That okay, these are the symptoms happening to my animal. Based on that, we run a equation. We run an algorithm behind which bring up the list potential diseases based on those symptoms. Those symptoms then we run through in terms of animation. Just farmer can see those animation and then make the choice. Yes, this is a symptom. I am sure. No, this is not. I am not sure. So based on these identification process,
we are able to finalize the final list, which then shared with the veterinarian doctor. And this veterinary doctor, once he received, he reviewed the list, and then he asked certain question if need be. If need be, he asked certain question back to the farmer that okay, if these are symptoms, can you explain more about these symptoms? Once he get the final answer from the farmer, then he review it again, and then he will plan his next course of action, whether he has to visit the farm, view the livestock, or he has to be sent his AHW, that's the animal health worker, or there is a need of the sample collection for a further lab testing. Once he is assured that okay, these are the symptoms, this is the disease, then he write the prescription and send it to the farmer. This is all going through the app. Once farmer receives the this prescription, he may take that prescription to the nearest veterinary shop, veterinary clinic, and then ask for the medicine. So here I'm going to take you through that's how our end-to-end things flow in the application. So we give the knowledge to the farmer in terms of running the animation, whether those are for symptoms, for the diseases, or for the best practices. Using those practices, using those animations, farmer able to make his decision that will sort of like decision support system. These things feed to the my calendar based things, like we have day-to-day activities, we have our medicinal activities, and then we have our journal activities, and each and every activity is linked to the calendar. Yeah. So these daily activities, based thing, once farmer see that yes, this activity I have to do, he done, and then he tick mark. So these list, once checked, going to feed into the farm diary. The farm diary is what it is, also in a very very simple form, where farmer has to be just say yes, no, or check it, and this is how we maintain the farm diary or record for the farmer. Feed and nutrition section. In the feed and nutrition section, we are talking about, let's say, what are my earlier ration plans, what are my feed plans, what my feed production plan look like, what is the feed cost economics. So these major segments we are covering, and to explain farmer that how he has to be use our feed tool, we run the animation, which is quite very simple, and farmer can familiar very much quickly with this. And then feed selection, we are having three kind of feed selection tools. One is very simple, you have to be swipe it. The other one is detailed description, where we are giving detail of each ingredients. And then the third one is a simple list, where he has to be say yes, I have to be go with the maize, or I have to be go with the barley. He has to be just check it. So this, when I was earlier saying infographic tool we are using, so here one can see very quickly in the oats, most of the things are green, but the thing which is less likely is the protein. So based on these infographic tools, he can understand that yes, I have to go with the oat, and he can swipe right and left. Based on the right and left swipe, the selection happens, and that add to his list. So again, similar thing. Now I'll run through our app. So in this app run, you are going to be see the two apps. One is used by a farmer who is a cattle owner, or let's say doing a dairy. The other app, which is used by the veterinarian, so he is going to communicate to farmers after reviewing his diseases or symptoms. Let's run the application.
Okay. Yeah. So you saw that how farmer use the his mobile app and then communicate to the veterinarian, and then veterinarian saw the symptoms, saw the diseases, and then based on those he recommended the prescription. And then farmer saw the prescription, he paid to the veterinarian and took prescription to the nearest veterinary shop and got the medicine. Yeah. So this is my presentation on Paravet tools which we are building. So now I am open for the question and answers. Thank you, Sandeep Sharma ji. Yeah. Uh, now I would request all the participants to unmute and raise their questions one by one, or you can also write your question in the chat box. यदि आपका किसी का भी प्रश्न हो संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। किसान मित्र की वेबिनार में, जिससे कि सभी किसान लाभान्वित हों इससे। तो सर मेरा एक प्रश्न था। जी। मैं सिंपल एक साधारण भाषा में किसानों को ये एक बात जानना चाह रहा हूँ कि किसान आपकी इस ऐप को किस प्रकार से मतलब यूज कर सकते हैं, सिंपल भाषा में। ये आपने मतलब थोड़ा सा एक्चुअली किसान भाई तो थोड़ा सा हिंदी में बता देंगे, थोड़ा सा उनको समझ में आ जाएगा कैसे अपन यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग हमारी ऐप को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो जो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे अधिकतर किसान डे टू डे बेस पे जाते हैं अपना मिल्क देने के लिए, तो वहाँ पे वी आर गोइंग टू सेट आवर पर्सन एंड ही इज गोइंग टू बी शेयर आवर एप्लीकेशन विद द फार्मर्स। रिसेंटली वी डन, हम लोगों ने एक सर्वे किया था विद 100 फार्मर्स एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स उन्होंने अपना दे एक्सप्रेस देयर डिज़ायर कि हमें इस तरह के जो इनोवेटिव टूल्स हैं चाहिए, ताकि हम एनी टाइम किसी भी समय जो वेटनेरियंस है उसको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भेज सकें, और एक जो सॉल्यूशन होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो भी उनकी दवाएं हैं वो प्राप्त कर सकें। हम्म। और उसमें अधिकतर किसानों का जो रुझान था, they are very positive and they are saying that if such tools can come, definitely उनको यूज करके they can improve their animal health and they can give जो भी let's say farmer है वो अपना जो पशु है या उसका जो भी let's say एनिमल है उसको वो ट्रीटमेंट ऑन टाइम कर पाएंगे। अब सम टाइम क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में जस्ट सिंपल एडवाइस वर्क्स, और कुछ कुछ केसेस में यू हैव टू बी डू द इंजेक्शन, आपको इंजेक्शन लगाना है या मेडिसिन है उसको ऑरली देना है। तो बट बहुत सारे केसेस में अगर वेटनेरियन का एडवाइस भी मिल जाए तो जो फार्मर हैं, जो मेरे किसान भाई हैं, वो अपने पशु को बचा सकते हैं बीमारी से, और उसकी जो लेट्स से हेल्थ है वो मेंटेन रख सकते हैं। नहीं सर, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था। जैसे सपोज कोई किसान है और आपके मतलब उसने अपना आपका ऐप अपने मोबाइल में डाला डाउनलोड है, कर यस। रखा है, हाँ डाला जी। हुआ है और रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है। अब इन केस उसका पशु है या कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है, तो वो उस ऐप के द्वारा उसके फोटो वोटो लेके सिम्टम्स लेके उसका डिस्क्राइब करके ऐप में ही सारा चीज़ हो जाएगा। ऐप में सारा चीज़ हो जाएगा, और जब वो अपना वेटनेरियन को या अपनी फिर रिपोर्ट कोई भेज रहा है, जब अपनी रिपोर्ट भेज रहा है, ही कैन कॉल इट फ्रॉम देयर, ही कैन मेक अ कॉल, वॉइस कॉल भी कर सकता है और वीडियो कॉल भी कर सकता है, राइट। और जब वो वीडियो कॉल करेगा, वॉइस कॉल करेगा, तो वो बता भी सकता है कि मेरे पशु को ये सिम्टम्स तो मैंने भेज ही दिए हैं, बट ये चीज़ें हैं जो मुख्यतः अफेक्ट कर रही हैं। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या नाम है, किसानों को आप मैं जैसे कि उसने किसान ने अपनी क्वेरी भेजी आपके ऐप में, वो आपको प्राप्त हो गई, देन कोई मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली उनको कितना समय में पहुंचवा देते हैं, या फिर ये अभी 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 तो हम लोग उस मॉडल पे नहीं कर रहे हैं, बट हाँ इन फ्यूचर हम लोग उस पे भी जाएंगे जहाँ पे वी नो, हमें पता है कि किसान को जो वो पशु है, कौन सा पशु है, उसको क्या बीमारी हुई है, वेटनरी डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है, और अगर किसान चाहता है कि उसके डोर स्टेप पे, उसके हम्म, दरवाजे पे मेडिसिन का डिलीवरी हो, तो वी कैन अरेंज, हम लोग कर सकते हैं। और उसके साथ ये भी अरेंज कर सकते हैं कि जो एनिमल हेल्थ वर्कर हो
वो जाके उसको सलाह दे, उसको करके दिखाए कि ये ऐसा इंजेक्शन था, इस तरह से लगाना है। ओके ओके। इसमें जी। सर ऐप डाउनलोड करने के बाद कोई रजिस्ट्रेशन, कोई चार्जेस तो नहीं है सर किसान के लिए? अभी एज सच हम लोगों ने फार्मर से कोई फीस नहीं रखी है। और हम लोग अभी अपना जो ये जो बिजनेस मॉड्यूल है इसको रिफाइन भी कर रहे हैं। तो एज सच देर इज नो फीस फॉर द फार्मर। बट अगर वो कंसल्टेशन लेता है वेटनेरियन से, तो एक जो वेटनेरियन का जो फीस होता है 50 रुपीज ही हैज टू बी पे, तो फॉर हिज एडवाइस। और ये जो पेमेंट है ही कैन पे डिजिटली। so we built the solution। हमने जो ये डिजिटल पेमेंट का सॉल्यूशन है अपनी ऐप में इस तरह से बिल्ड किया है कि फार्मर उसको यूज करके जो वेटनेरियन है जिससे उसका प्रिस्क्रिप्शन आया है उसको पे कर सकता है डिजिटली। ठीक है। वो एनी अदर क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स की तरफ से? सर मेरा एक क्वेश्चन और था। आप कैन यू डिस्क्राइब किसानों के लिए आप ये ऐप कैसे फायदेमंद है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आप कोई सलाह देना हाँ, चाहें, एडवाइस देना चाहें किसानों को, हाँ जी, जैसे हाँ जी, हाँ कि जी। हाँ। तो किसानों के लिए ये जो ऐप है किस तरह से फायदेमंद है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एंड दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। उसका ही आंसर ढूंढने के लिए हमने ये ऐप बनाई है। तो है क्या, बहुत सारे किसान हैं जो लाइव स्टॉक फार्मिंग से जुड़े हैं। बहुत जो कुछ तो ऐसे किसान हैं जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत कुछ आता है। बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो जुड़ रहे हैं और उन्हें जो डिजीजेज हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। तो वो एनिमेशन क्लिप देख के, सिम्टम्स की क्लिप देख के एक अपनी जो जानकारी है, खुद की जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं कि हाँ ये वाले डिजीज में यही सिम्टम होता है। एक तो वो। दूसरा, कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे वी आर टेलिंग हिम यू हैव टू बी यूज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो फॉर एग्जांपल आपको जो आपका जो चारा है उसमें जो क्रूड फाइबर है उसकी मात्रा अधिक रखनी है। अगर लैक्टेटिंग काऊ है, आपको कंसंट्रेट अधिक रखना है। आपको जो ये है बेसिकली खल है, मस्टर्ड केक है, सिसमी केक है, ये ज़्यादा देना है लैक्टेटिंग काऊ को। और इन चीज़ों से ही कैन इम्प्रूव। वो अपनी जो एनिमल की प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव कर सकता है। दूसरा, अपने एनिमल को हेल्दी भी रख सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फार्मर खुद ही डायग्नोस करके, कुछ कुछ केसेस में डायग्नोस करके, डिजीज आइडेंटिफाई करके वेटनेरियन से सलाह भी ले सकता है, बजाय कि ही हैज टू गो टू और कॉल समवन एंड वो बोलेगा कि मैं 1 घंटे बाद आ रहा हूँ, 2 घंटे बाद आ रहा हूँ। ही कैन गेट दैट एडवाइस इंस्टेंटली। या उसको तुरंत मिल जाएगा। तो वो जो एडवाइस है वो तुरंत मिल जाएगा। और इसके लिए हमारा जो ऐप है दो मोड में काम करता है। एक है ऑनलाइन मोड, एक है ऑफलाइन मोड। कई बार किसान क्या है, रिमोट एरिया में जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जो जी जी। नेटवर्क है, इंटरनेट का कवरेज है नहीं है। लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है अपनी एप्लीकेशन में कि वो एसएमएस के थ्रू, एसएमएस जाएगा किसान के फोन से, एसएमएस जाएगा वेटनेरियन को, और वेटनेरियन उस एसएमएस को पढ़ेगा और उसको पढ़ के ही कैन एक्सप्लेन दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन यू हैव टू बी। अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है ये भी एसएमएस फॉर्म में ही आ रहा है किसान को। बट जब किसान को वो एसएमएस दिखेगा तो वो रियल एसएमएस ना दिख के इट लुक लाइक प्रिस्क्रिप्शन। ऐसे ही जो वेटनेरियन है उसको एसएमएस ना दिख के एक डिजिटल फॉर्म में सिम्टम लिस्ट दिखेगा उसको। और मैसेज जो जा रहा है इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, ताकि जो लेट्स से डेटा थिफ्ट है वो ना हो सके। तो एंड टू एंड सिक्योरिटी इज देयर। अभी तक सर लगभग लगभग आपसे कितने पशुपालक या किसान जुड़े हुए हैं इसके, आपकी इस हम एप्लीकेशन लोगों से? हम लोगों ने एक जो छोटा लेट्स से पायलट करना है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट पायलट। अभी हम लोगों ने अपना जो ऐप है वो डेवलप किया है, फाइनल किया है। और नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। जयपुर के पास एक गांव है महाराजपुरा, वहाँ जी पे जी। हम इसको लॉन्च करेंगे डेयरी फार्मर्स के साथ। हमारी जो एप्लीकेशन है अभी दो किसान लेट्स से ग्रुप को टारगेट करती है। एक तो वो है जो कैटल्स की फार्मिंग कर रहे हैं, गाय पालक हैं, गो पालक हैं। और दूसरा जो पिगरी कर रहे हैं। जी जी जी। और ये जो हम लोगों ने ऐप डेवलप की है दैट, इसका जो एक्सपीरियंस है इट कम फ्रॉम
working in the past with the University of Liverpool's veterinary college और इलरी, तो उन्होंने ही हमें मार्गदर्शन दिया था कि आप इस तरह से सिंपलीफाइड मैनर में अपनी जो लेट्स से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है डिजीज और सिम्टम्स को बताना, बट दे एडवाइज्ड अस कि आप इस तरह से इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, एंड देन वी बिल्ड आवर ओन थिंकिंग टू ब्रिंग इनोवेशन। लेट्स से इसको एनिमेशन के थ्रू अगर हम करके देते हैं तो फार्मर्स को बड़ी आसानी से जो बीमारी है और उसका जो सिम्टम है समझ में आ सकता है। थैंक यू सो मच संदीप शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी किसान भाइयों के लिए दी है। तो मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक पशुपालक किसान आपकी इस ऐप का उपयोग करें या और अधिक से अधिक पशुओं की बीमारियों के बारे में या लक्षणों के बारे में जानकारी लें और दें आपको, जिससे कि वो अपने पशुओं को स्वस्थ रखें और कम समय में अधिक से अधिक अपनी मतलब पशुओं को स्वस्थ रखें और अधिक से अधिक उत्पादन करें अपने दूध उत्पादन का। तो थैंक यू सर। इफ थैंक यू। यदि और भी कोई क्वेश्चन हो अपने पार्टिसिपेंट्स का तो कोई पूछ सकता है, जिससे कि हम अपनी मीटिंग समाप्त करने से पहले कोई हो एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन जो भी उपस्थित हैं, जिससे कि मैं आगे अपनी कार्रवाई करूं। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर, देयर इज नो ओके। क्वेश्चन। So once again, I would like to thank you, Mr. Sandeep Sharma ji. Your presentation provided us with deep insight. Many thanks for sharing your invaluable experience in agriculture technology, and participant got benefited from your talk. At last, I would like to thank you everyone for sparing their valuable time with us. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू। नमस्कार।